expenses, assets, liabilities, equities. So I think the this chat box should be turned off, please. Host, can you do it? Sure, ma'am. Because others are also getting distracted, so they are just posting in the chat box. Am I audible properly? Switch off your cameras. Nobody will on your cameras. I don't need to repeat this again and again in all the sessions, please. No need to on your cameras. अपना कैमरा बंद रखिए. अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ आती तो मैं हिंदी में भी बताती हूँ. डोंट ऑन योर कैमरास. अगर आप प्रियंका, इफ यू हैव द सेटिंग फॉर स्विचिंग ऑफ द कैमरास, दैट आल्सो प्लीज इनेबल कर दो. Yes, ma'am, I'm working on it. हाँ हाँ, श्योर, थैंक यू. ओके. Because somebody are sleeping and all, and they are all fine. So we were talking about accounting plan. So accounting plan serves students as a strategic framework for managing, for organizations, financial activities, which ensures that there is a compliance, regulation, proper formulation and facilitation so that you can make informed decision. So here, when you talk about accounting plan, सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे? In that, सबसे पहले आप accurate financial reporting करोगे. Then you will do a proper budgeting. Budgets बनाओगे अच्छे से कंपनी के लिए. And then you will see whether there is a tax compliance followed or not. So this is followed by selecting the proper accounting method, students. Either it can be cash basis or it can be the accrual basis, which aligns, you can say, with the organization's model. So when you establish this particular comprehensive chart of accounts, your categorizing of financial transaction will become in a streamline. बहुत अच्छे से आपके financial transactions को आप streamline में maintainly करोगे in the books of account. क्यों? Because आपने एक plan पहले से बनाया है. किस तरह से मुझे accounting record करना है. That is income, your expense, your assets, your liabilities. Okay. Also, what will happen? The effective accounting plan, when you design, it will allow students to identify, to classify the transactions easily. तो इसके वजह से बिजनेस इजीली ट्रैक कर सकता है कि उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या था अगेंस्ट ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट रिजल्ट्स. सो ये आपको इजीली ट्रेस आउट हो जाएगा व्हेन यू प्रिपेयर एंड प्रॉपर इफेक्टिव अकाउंटिंग प्लान. Next, we are going to discuss is about the responsibility centers. अब responsibility का मतलब क्या होता है? In simple, किसी को जिम्मेदारी देना, right? So in accounting, in business, responsibility center means that part of a company where a manager has a authority and responsibility, where you have certain goals, objective, policies, जिसको आपको फॉलो करना होगा. You need to achieve those, whatever is for your designated department. Okay. So you can say that responsibility centers are nothing but a particular segment or unit in the organization for which a particular manager, employee, department is held responsible, students, accountable for its goal, objective. Let's say Preeti is in charge of accounts department. So if anything goes wrong in the accounts, Preeti will be held liable for that. Held liable in the sense, उनके ऊपर वो questioning होगी कि what is the issue,
क्यों कंपनी इतना लॉस में जा रही है, क्यों आपने एंट्री मिस कर दी. So responsibility center means you have to handle that particular work with authority and responsibility. It is a functional entity within the business that tends students to have its own goals, objectives, policies, procedures, and give the managers responsibility for revenue, expenses incurred, fund invested, and so on. Okay. So you can say that there are different specific part of an organization where managers are accountable for their performance. Okay. Especially when you talk about revenue, expense, or profit. So they play a very crucial role, okay, in decentralized management by allowing the organization so that you can delegate decision making properly to managers at different levels. Each segment operates with efficiently and effectively. Okay, let's take an example. A cost center is responsible students for controlling, for minimizing the cost. So when you prepare the accounting plan, it will provide you separate tracking of your expenses, which is incurred by that center. So a revenue center is responsible for generating the revenue. So the accounting plan should be kept in mind when you prepare what are the revenues generated by that center. Okay. So by tracking your financial transactions according to your responsibility center, business can easily gain understanding about what is the financial performance, how you can make informed decision, how you can allocate resources, how you can improve the performance. Okay. Also, when you talk about multinational company, MNCs, large companies, the organization tasks are divided into subtasks because each task is given to different small sectors, divisions, group. Okay. So all groups in that organization, which we prepare small, are what? Our responsibility centers. Okay. Clear till now? Any doubts till now? Yes, no. Okay, fine. Just show the thumbs up. That's okay. Okay. Thank you, Sohel. Fine. So the definition of responsibility center, which is given by one of the expert, that is Robert Anthony. What happened, Gagandeep? Yes, unmute. Gagandeep, what happened? Unmute yourself quickly. Okay, fine. So the definition which is given by Robert Anthony, firstly we'll read and then we will discuss, okay? Responsibility accounting is that type of management accounting which collects and report both planned and actual accounting information in terms of responsibility centers. That means responsibility accounting manages students. How are you going to collect the record? How are you going to report it in your financial statement? The plans, what is your actual accounting information so that you come to know when you take a decision. Okay. Next, we are going to discuss about is the significance of responsibility center. Now, what is the significance? That means the importance.
Okay. Now, responsibility center, as we all know, that it plays a very crucial role in enhancing the company's organizational efficiency, effectiveness. So we need to understand which all things are important when you talk about responsibility center. The first is assignment of role and responsibility. Now, the first thing that when we were discussing about responsibility, हमने यही चीज बात की थी, responsibility मतलब जिम्मेदारी. So, assignment of role and responsibility मतलब आप कौन से डिपार्टमेंट को क्या रोल देने वाले हो, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आपको इजीली पता चल जाएगा. So, responsibility centers clearly define students. What are the roles, responsibilities within the organization? So this clarity will ensure that each manager knows what is expected out of them. Okay, leading to more structured approach to the organizations. Let's take an example. In a manufacturing firm, okay, a cost center might be dedicated for production department, let's say. So the production manager is responsible for what? Controlling your manufacturing cost, right? That is labor, material. So when you define this role, the organization will ensure that there is proper accountability for cost management, their performance, which will enable that you achieve your targets. You get the feedback about what is the role and how is the responsibility served. Okay. This was fluctuating. That's why I Okay. was raising hand. Yes, Ayush. Hi, ma'am. Please Yeah. explain with English and Hindi both language. Yeah, I'm using both the things. जहाँ जहाँ हिंदी यूज करना होगा मैं हिंदी यूज कर रही हूँ आयुष, if you notice it. ओके. Because ये पूरा मैं पीपीटी हिंदी में नहीं पढ़ा सकती. नहीं नहीं दोनों का कॉम्बिनेशन. और ये पीपीटी हाँ, मिलेगी क्या एलएमएस में हम लोगों के पास? ये आपको मिलेगी, वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा बाय द टीम. ओके मैम, थैंक यू. Student, if you have any queries, now you can ask me at the end. Let us first complete the session, okay? Then we'll discuss at the end. Okay, fine. नेक्स्ट इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस. अब इम्प्रूव परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के वजह से आपके कंपनी का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, राइट? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विल अलाउ स्टूडेंट्स फॉर टेलर्ड परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, बिकॉज आपको पता है आपने किस कौन से डिपार्टमेंट को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. सो आप इजिली कंपैरिजन कर सकते हो, करेक्ट? सो बाय इवॉल्युएटिंग द परफॉर्मेंस through their key performance indicators, organizations can foster a culture of continuous improvement. अगर हमें पता चलता है कोई XYZ डिपार्टमेंट है जो कंटिन्यूसली लॉस में जा रहा है, so what we will do, we will provide them suggestions, measures, so that they can move on to the next level of improving the loss, right? So यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हेल्प करेगा, बिकॉज आपको पता चलेगा कि उनका परफॉर्मेंस किस तरह है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इन अ प्रॉफिट सेंटर लाइक रिटेल स्टोर, okay, the manager is responsible for both sales revenue and cost, right? So performance metrics may include sales growth percentage, profit margin. So if the store consistently meets or exceeds the target, that means there is an effective management, the operational efficiency is proper. Managers are motivated over there to enhance performance because they will see the direct relation between the efforts and the financial outcome. तब आपको जब पता चल रहा है कि मेरा स्टोर कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, और प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करोगे, राइट? अब आपका स्टोर प्रोग्रेस कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, हमेशा अपनी टारगेट मीट कर रहा है,
That means आपका जो management है, that is efficient and it's proper. Okay. Then comes delegation and control. Delegation means division of work. Okay. So responsibility center facilitates students effective delegation of authority, which will allow the managers at different levels to make decisions which are related to their areas. Okay. So delegation will foster a sense of ownership, accountability, which will enable the centralized control over the organization. A simple example, एक बड़ा सा business है, large organization is there. हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, प्रॉफिट डिपार्टमेंट. ओके, सो इन्वेस्टमेंट सेंटर where the division manager will have a responsibility of what, कि कौन से इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मुझे प्रॉफिट हो रहा है, किस तरह से मुझे बजट एलोकेशन करना है कंपनी का ताकि कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो. So the central management, what they can do, they can set the overall goals, but the division manager will decide how that goals will be achieved within their center. Okay, so this delegation will allow you a quicker decision making, which will make the manager students accountable for their performance. Then we have help in decision making. Now, responsibility center obviously will help you in taking decisions, operational decisions, that is day-to-day decisions. By analyzing the performance, managers can take informed decision about the strategic goals. Like sales department. In a revenue center, the sales department, the sales manager, वो क्या देखेंगे, sales का trend क्या है, कस्टमर फीडबैक क्या है, बाहर मार्केट में कंपटीशन क्या चल रही है, सो दैट दे कैन डेवलप स्ट्रैटेजीज टू इंक्रीज द सेल्स. ओके, सो इफ अ मैनेजर आइडेंटिफाइज कि हमारे कंपनी में लॉस हो रहा है, जो सेल है वो डिक्लाइन हो रहा है, दे विल क्विकली implement targeted marketing campaigns. They will adjust the pricing strategies. They will wait for the approval कि वो pricing strategies approve हो जाए top management के साथ, and then आप उसे implement करें, because आप धीरे धीरे loss की तरफ जा रहे हो. Helps in cost control. Now, responsibility center students are instrumental in cost control because they will provide the manager with detailed information about their expenses, which are related to the specific operations. Okay, like IT department. The IT manager is responsible for, you can say, monitoring the expenses which are related to technology, services. तो जब वो रेगुलरली रिव्यू करेंगे एक्सपेंस अगेंस्ट द बजट, तो उन्हें ये आइडेंटिफाई होगा मैनेजर्स को कि कौन से एरिया में ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है, जैसे कि सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में ज्यादा हो रही है क्या, तो वो क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करेंगे, कुछ मोर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करेंगे. तो ये सब बेनिफिट्स आपको मिलेंगे with the help of responsibility centers. You can call it benefits, you can call it importance, you can call it significance. N. Okay? Clear with this? Please show the thumbs up quickly. Okay. Next, we are going to discuss about the objectives. Now, what are the objectives, students? Okay. Now, the objectives is basically very crucial of responsibility center for enhancing the financial management, operational efficiency within the organization, right?
So the first objective is your cost analysis. देखो हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आपको वो डिपार्टमेंट में क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस, इजीली आप ट्रेस आउट कर सकते हो, राइट? तो कॉस्टिंग का एनालाइजिंग भी आपको इजीली होगा. So the main objective, you can say, one of the primary objective of responsibility center is your cost analysis. To conduct a detailed cost analysis. Okay? That means monitoring, analyzing, controlling cost within that specific department. आप ये देखोगे कि कॉस्ट इजीली मैनेज हो रहा है और वो बजट के अंदर है, बजट एक्सीड नहीं करेगा. ओके, अगेन विल टेक एन एग्जांपल. सी, फॉर ईच एंड एवरीथिंग इफ वी अंडरस्टैंड इट विथ एग्जांपल आपको जल्दी समझ आएगा. अदरवाइज इफ वी जस्ट डिस्कस द थ्योरी तो आपको वो समझ नहीं आएगा, बिकॉज ऑल आर रिलेटेड विथ ईच अदर ओनली. ओके, so let's say again regarding to cost analysis in manufacturing plant. Okay, वहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जो रेगुलरली एनालाइज करता है क्या लेबर की रिक्वायरमेंट है, क्या मटेरियल कॉस्ट है. सो व्हेन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द बजटेड कॉस्ट, मैनेजमेंट क्या करेगा, न्यू स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करेगा कि किस तरह से मैं वेस्टेज को कम करूं. How can I improve the efficiency in the organization, which will ultimately increase or enhance the profitability? Okay. Next objective is budgeting and forecasting. Now, budgeting and forecasting means you prepare the budget, you forecast about the future. Managers are tasked with developing budget students for their centers. बिकॉज अगर आपके पास बजट है तो इजीली आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो. लेट्स से यू वांट टू बाय अ हाउस. विल यू ब्लाइंडली गो टू द ब्रोकर कि मुझे घर खरीदना है? नहीं ना. पहले आप क्या करोगे, आप डिसाइड करोगे मुझे कितने तक का घर खरीदना है. वरुण, स्विच ऑफ योर कैमरा. आप कितने तक का घर खरीदना चाहते हो? करेक्ट. What is your budget? 50 lakh, 70 lakh, whatever it may be. Correct? So that is what you are deciding the budget. क्यों? कि आप ये इंश्योर करो कि आप उसको क्रॉस ना करें. Fine? So same way in the business also, managers develop budget for their centers, which will help them for planning, allocating the resources to this. With the help of that, they can facilitate financial planning. Okay, let's take an example. The marketing department is there. Okay, now marketing department will provide a budget for promotional based activities on the expected sales revenue. So accurate budgeting will help the department to allocate the resources for advertising campaigns, measure their effectiveness against forecast sales. Okay, कि अगर मैंने ये प्रमोशंस किया, ट्रायल्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए ऑडियंस को, तो क्या मेरे टारगेट ऑडियंस मेरे प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे इन फ्यूचर? सो यू कैन फोरकास्ट दैट. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट. यस, responsibility center students establish the clear performance metrics. That means they focus on evaluating what is the effectiveness of managers, the efficiency of, you can say, the operations. You can easily assess the performance against the benchmark that is set up. Okay? Strategic planning. Now, when you talk about strategic planning. Now, strategic planning means it contributes to your broader, you can say, strategic planning process where you align the department goals with your organization objective. आपके डिपार्टमेंट के जो गोल्स है और आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, कहीं ना कहीं रिलेट होना चाहिए ना. दोनों ईस्ट और वेस्ट तो नहीं होने चाहिए.
Correct? So this objective will ensure that each center supports the overall mission and vision of organization. They align with the operational activities, with the long-term organization goals. Okay? Let's take an example. एक कंपनी है जो ये सोच रही है कि मैं किस तरह से अपना मार्केट में प्रोडक्ट्स को एक्सपांड करूं. So each profit center will set specific target, revenue target that contributes to overall growth strategy. So managers क्या करेंगे? कोलैबोरेट करेंगे टू डेवलप इनिशिएटिव्स जो अलाइन होंगे उनके स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन के साथ कंपनी के, जो एंश्योर करेंगे दैट the goals are achieved, whatever is there of department and that with of organization. Okay. So in short, आपको क्या समझ आता है from this objectives of cost analysis, budgeting and forecasting, performance measurement, decision analysis and strategic planning? That these are very essential students for fostering the accountability, for improving operational efficiency. Okay. So when you establish a clear objectives, you align it with the organization goals. So responsibility center that time will play a very critical role in the success of the organization. Okay. Clear? Okay. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन. सी देखो, अगर कोई चीज का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी कुछ ना कुछ होगा ही, राइट? सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, और यू कैन से लिमिटेशंस? द फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ responsibility center students can sometimes create conflicts of interest among managers. एक दूसरे की सोच नहीं मिल रही है, उस वजह से डिस्प्यूट स्टार्ट हो गई, particularly when the goals are misaligned with the broader organization objectives. Managers might prioritize their center performance over the company's overall success. Okay, let's take an example to understand this. A manager in a profit center, they will focus on what? Maximizing short-term profits, right? To meet the targets. Correct? So it will lead to decisions that will harm your long-term sustainability. That means cutting necessary expenses for maintenance, employee training. So this narrow focus will result in what? Suboptimal outcome students for the organization. तो यहाँ पे आपकी थिंकिंग को क्लैशिंग हो सकती है. एक बोलेगा मेरे को शॉर्ट टर्म अचीव करना है, एक बोलेगा मुझे लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना. The requirement of time and effort. Implementing. Managing the responsibility centers requires significant time, effort from both management also, staff also. The process of setting up, evaluating performance could be resource extensive students. Okay. Ignore personal reaction and feedback. Yes. Responsibility centers rely on quantitative metrics for performance. They overlook वो आपके only numerical terms को ध्यान देते हैं. आपके कंपनी एम्प्लॉय का मॉरल क्या था, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या था, पर्सनल फीडबैक क्या था, इसका कोई लेना देना नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को. ओनली दे कंसिडर quantitative, that means monetary. Okay, so a cost center manager will focus what? Reducing cost, right? He will implement measures that can lead to employee dissatisfaction, like cutting bonus, reducing training opportunities. Okay, too much process only. Responsibility centers can sometimes become over focus on process and procedures.
सो या इसके वजह से क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी स्टॉप हो जाएगी, स्टिफल हो जाएगी। आप नया चीज नहीं सोच सकते क्योंकि आपको जो बोला गया है आपको उसी तरह से काम करना है। इवन दो यू नो द प्रोसेस इज लेंदी, you cannot do anything. Okay, so that is again a disadvantage or a limitation, you can say. Okay, so your organization students should strive for balanced approach so that they incorporate both quantitative and qualitative assessments in the organization. नाउ हम कब से वर्ड सुन रहे हैं, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, बट ये होते क्या है? We will understand their meaning as well. That is the types of responsibility centers. The first is your cost center. See, देखो ये जो names है ना चारों, उसी में उसका मतलब छुपा हुआ है। आप एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करो, मत इजीली आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कॉस्ट सेंटर मीन्स जहां पे मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट। They do not directly generate the revenue. The focus is on minimizing expenses, but you have to maintain the quality. आप कभी भी कॉस्ट को मेंटेन कम करो, बट आपकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना कंपनी के प्रोडक्ट, अदरवाइज यू विल लूज योर कस्टमर। ओके, let's say a factory production department where manager oversee production cost, your labor, your material and overhead. So their performance is assessed based on what is the cost and what is the budget that is set. उसके ऊपर से डिसाइड होगा वेदर कॉस्ट कटिंग की जरूरत है या नहीं। Then comes revenue center, which is responsible for generating revenue, मतलब income. Manager in this sector centers are evaluated on revenue they generate, okay, regardless of the cost. For example, company's sales team that is tasked with selling products or service, so उनका performance कैसे judge किया जाएगा? On the basis of sales revenue, okay, that they generate. Then comes profit center. Profit सबको पता है क्या होता है, when your selling price is more than the cost price. So यहाँ पे profit center is responsible students for both generating and controlling the cost. So managers in the profit centers are accountable for generating the profit by their operations. Okay, so यहाँ पे एक चेन स्टोर मैनेजर है who is responsible for sales revenue, मैनेजिंग द ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे कि उसको अपने खर्चे भी मैनेज करने होंगे, रेंट, सैलरी, इन्वेंट्री कॉस्ट, करेक्ट। सो उसका परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगा? बेस्ड ऑन द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम सेल्स। Then comes your investment center. Now, investment center is where you control over in revenues, your cost and the investment of assets. आप ध्यान दोगे कि कौन से पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितना जल्दी मुझे उसका रिटर्न मिल रहा है, तो ही आप वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट सेंटर में इन्वेस्ट करोगे। ओके, so these are the various types, students. When you understand these types, the organization can easily define the accountability, performance metrics at various organization level. Next, we are going to talk about determinants. Now, how these determinants, how their role and responsibilities affect the organization. First is your financial analyst. Who is financial analyst? ये क्या करते हैं? ये एनालाइज करते हैं आपका कंपनी का फाइनेंशियल डेटा, ट्रेंड को एनालाइज करते हैं कि कौन सा एक्सपेंस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, सो दैट दे कैन टेक प्रॉपर डिसीजंस
So they evaluate students the financial performance of responsibility center, provide the insight for improving efficiency, profitability. Okay. So financial analyst क्या करेगा? They will develop KPIs, that means key performance indicator, जिससे वो easily measure कर सके कि कंपनी वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सक्सेस क्या है, ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन हो सके. ओके. फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पर्टिकुलर प्रॉफिट सेंटर इज कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मिंग अगेंस्ट द रेवेन्यू टारगेट. तो वो क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करेंगे उनके ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज का, आइडेंटिफाई करेंगे क्या रीजन से जो कॉस्ट है, प्रॉफिट है, वो कम होता जा रहा है कंपनी का. ओके. नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंट. कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा? दे विल फोकस ऑन ट्रैकिंग, एनालाइजिंग, कंट्रोलिंग कॉस्ट, मेकिंग देम इंटीग्रल टू द कॉस्ट सेंटर. ओके. सो कॉस्ट अकाउंटेंट दे विल परफॉर्म स्टूडेंट्स वेरिएंस एनालिसिस, मतलब एक्चुअल और बजटेड को कंपेयर करेंगे. अगर कुछ डिफरेंस आता है तो सजेशंस या रेमेडियल मेजर्स लेंगे. मैन्युफैक्चरिंग लेट्स से यूनिट इज देयर, वहां पे कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा कि मटेरियल कॉस्ट अगर इंक्रीज हुआ है ड्यू टू सप्लायर के प्राइस के वजह से, तो वो क्या करेंगे? नेगोशिएशन सजेस्ट करेंगे कंपनी को, सो दैट दे कैन गेट बेटर कॉस्ट, या फिर दूसरी कंपनी के पास से सप्लाई लेंगे जहां जो उनको कम कॉस्ट दे रही है. देन यू हैव बजट एनालिसिस, which is responsible for developing, analyzing, managing budgets for responsibility centers. Okay. इससे आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना बजट मुझे एलोकेट करना है. इंटरनल ऑडिटर. हु इज इंटरनल ऑडिटर? जो कंपनी के अंदर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करते हैं, कंप्लायंस चेक करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं. They ensure that the centers operate efficiently and effectively, students. Okay. Then comes your management accountant. Now, what does management accountant does? वो आपकी कंपनी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अबाउट द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग. ओके. सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट वर्क closely with your center manager so that they can analyze what are the financial implications with their decisions that they do. Okay. Clear? Yes, no? Okay. So I think you all can unmute yourself one by one now. Yes, Ali, what happened? Ali, unmute yourself. Atul, unmute. Ma'am, please repeat financial analyst. क्लास Okay, रखी है ये. हेलो yes. मैम, एक्चुअली आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट फाइनेंशियल एनालिस्ट. Yeah, tell me. मैम, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट. Okay, I'll explain that because Atul Okay. question was also same. ओके ओके, थैंक यू. Mute yourself and lower down your hand. जी. Yes. Next, Dimple, what happened here? Dimple. Ma'am, yes, I would like to on budget analyst. Okay, fine, no problem. Okay. Yes. Yes, Kushal, unmute. मैम सेम फाइनेंशियल एनालिटिक्स एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए ना. ठीक है, मैं कर दी. Okay. Vanshika. See, if anyone wants to know about this particular slide, मतलब आपको इसी particular slide में कोई डाउट है तो लोअर डाउन कर दो हैंड, बिकॉज मैं ये दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ.
ठीक है, तो I have the फाइनेंशियल, same question as well, ma'am, because I want to know the difference between cost and budget analysis. How are they differ each other? ठीक है, ठीक है, लो बताओ। यस शिवम। Hello. Ma'am, what is the major difference of internal auditor and financial analyst? What is the major difference? Both are same or other? What? I will explain that, don't worry. Thank you. Yes, Mohammed Anas. Yes, Actually, I want to ask a question like regarding this delegation. डेलीगेशन, What ओके। is the meaning of delegation? Distribution of मीनिंग responsibility. डेलीगेशन मतलब किसी को काम अलॉट करना। Okay. डेलीगेटिंग द वर्क का मतलब क्या होता है, हमने किसी को काम अलॉट किया है तो वो इंसान का रोल क्या होगा कि वो काम को पूरा करे। इफ कुछ चीज गलत हो जाती है, सो दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल फॉर दैट वर्क। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, you cannot go and blame other people, right? That is delegation, means division of work जिसको आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो distribution of work। आपको एक responsibility दी गई है, आपको वो पूरी करनी। क्लियर? Okay, fine. Let me just repeat this particular thing once again, this particular analyst part once again. See, financial analyst। अब एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपको बताती हूँ फाइनेंशियल मतलब क्या। फाइनेंशियल एनालिस्ट का मतलब होता है जो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का ट्रैकिंग रखते हैं। ओके, जो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का ट्रैक रखेंगे उसको हम फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलते हैं। मतलब वो रिसर्च करेंगे कंपनी के बारे में, एनालाइज करेंगे डेटा कंपनी का, इन्वेस्टर्स का, उनको पता चलेगा मार्केट ट्रेंड्स क्या है, मार्केट का सर्वे करने पे। मतलब इन शॉर्ट आप कंपनी के परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, दैट इज फाइनेंशियल एनालिस्ट। कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट वर्ड क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब आप कौन से प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट हो रहा है आप उसको ध्यान रखोगे। आपने अगर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड किया है कंपनी में कि लेट्स से इफ आई एम प्रोड्यूसिंग XYZ प्रोडक्ट जिसका कॉस्ट मेरा मंथली 50,000 ही होना चाहिए, बट आपका कॉस्ट एक्सीड कर गया 60,000, तो कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा, एनालाइज करेगा, ध्यान देगा किस वजह से कॉस्ट एक्सीड हुआ, क्या रीजंस थे, किस तरह से मैं कॉस्ट को कट डाउन कर सकता हूँ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो कॉस्ट अकाउंटेंट ध्यान देगा। ओके, बिकॉज उनका रोल ही वो होगा कॉस्ट को कंट्रोल करना, जहां जहां जरूरत नहीं है वो कॉस्ट को कट करेंगे, बट अगेन कॉम्प्रोमाइज, नो, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। देन कम्स बजट एनालिस्ट। बजट मतलब क्या, आप एक बजट बना रहे हो कंपनी का। अगर मुझे कहीं घूमने जाना है, अ सिंपल डे टू डे लाइफ एग्जांपल आई एम गिविंग यू ऑल, अगर मुझे कहीं घूमने जाना है, मैं ऐसे ही ब्लाइंडली चली जाऊंगी क्या घूमने? मेरे पास कुछ फंड्स होने चाहिए, आई शुड हैव दैट फंड्स विथ मी, आई शुड प्लान हाउ व्हाट शुड बी द बजट, व्हाट विल बी माय ट्रैवलिंग कॉस्ट, व्हाट विल बी माय स्टे कॉस्ट, सो अकॉर्डिंगली मैं अपना बजट बनाऊंगी। अगर मेरे फैमिली में 10 मेंबर है तो 10 मेंबर को ले जाने के लिए मेरा खर्चा कितना होगा। सो दैट इज व्हाट आप एडवांस में बजट बना के रख रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि कितना खर्चा हो सकता है। दैट इज फॉरकास्टिंग लाइक। देन कम्स योर इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर मतलब कंपनी के अंदर ही एक पर्सन होंगे जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करेंगे। वो देखेंगे कि आपने जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है अकाउंटिंग का वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है कि नहीं, कोई एरर्स तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। ओके, एंड देन कम्स द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट।
ना मैनेजमेंट अकाउंटेंट मतलब क्या होगा, जो आपके अकाउंटिंग प्रोसेस को मैनेज करेगा। आपने कॉस्ट का डेटा बना लिया, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए, बट उसको मैनेज कैसे करना है, वो डिसीजन कौन लेगा? एक मैनेजर लेगा, राइट। उनके डिपार्टमेंट में किस तरह से काम होना चाहिए, अगर बराबर नहीं हो रहा है, इनएफिशिएंटली हो रहा है, तो किस तरह से एफिशिएंटली हम वर्क ऑन कर सकते हैं। Okay, so that role lies with management accountant. Okay, now clear everyone? If you have the same question queries, please lower down your hands. Yes, KU, unmute. Rishi, unmute yourself. Yes, Rishi, I can't hear you. Bidhan, हेलो unmute. Yeah, हेलो। Bidhan. Good. यस हाँ, मैम, एक्चुअली मैम ये जो क्लास का जो रिकॉर्ड है ना, ये रिकॉर्डिंग मैम नहीं मिल रहा है, वो कहाँ पर मिलेगा? ये आप बाद में सपोर्ट में कॉल करके जरा पूछ लीजिएगा, वो आपको हेल्प अच्छा, कर देंगे। ओके मैम, थैंक यू, ओके थैंक यू। Yes, Sudhir. Yeah, good evening, ma'am. Yeah, good evening, ma'am. Can you explain again cost center in previous slide? Cost center. Okay. Fine. Yes, Rajesh Singh. मैम मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम लोग इसको डिपार्टमेंट वाइज अगर हम लोग उसको चाहते हैं पता करने की, जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट है, कैन वी हाँ, रेस्ट्रिक्ट इसकी? मेरे को लगता है कि ये शायद 25 डिपार्टमेंट में ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं समझा मुझे, आप प्लीज रिपीट करेंगे अब दोबारा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, दैट मीन्स कि इट विल बराबर। टोटली फाइनेंस के साथ ही वो मेरे को एनालाइज करेगा, कहाँ से करेक्ट। फंड्स आ रहे हैं या कहाँ पे हम लोग को उसको वो करने का, राइट? एग्जैक्टली, ऐसे या ही करेक्ट। कॉस्ट अकाउंटेंट जो है, हम्म। क्या इसको भी एक पेरिफेरल में रेस्ट्रिक्शन है क्या? मतलब डिपार्टमेंट वाइज आई वांट टू से कि कौन सा डिपार्टमेंट भी इसका हाँ, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? नहीं ऐसा कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट नहीं है। देखो, कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी का है, राइट। तो वो देखेगा हर एक डिपार्टमेंट वाइज। लेट्स से 10 डिपार्टमेंट है आपकी कंपनी मैम में, ठीक है। आप मार्केटिंग में इसको कैसे रिलेट करेंगे? मार्केटिंग में आपका मार्केटिंग का कॉस्ट कितना होगा, प्रमोशंस का कॉस्ट कितना होगा, करेक्ट। प्लस आपके डिलीवरी चार्जेस कितने लगेंगे, तो यू व्हाट यू विल डू, यू विल एस्टिमेट दैट डिपार्टमेंट। फिर मार्केटिंग इटसेल्फ इज अ प्रॉफिट सेंटर मैम, वो तो अपने हिसाब से काम करता रहेगा ना मैम। कॉस्ट अकाउंटेंट की बात आ रही है देखो, कहाँ पे, वही वाली बात आ रही है ना मैम, वो कैसे नहीं, समझेंगे? यू आर नॉट मेरे को तो ऐसा अंडरस्टैंडिंग। लग रहा है कि जैसे कि हम लोग को रॉ मटेरियल में जैसे हम लोग परचेज कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो वो हम्म। कितना हम लोग को, मतलब हम लोग वहां पे कितनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग इज रिलेटेड टू द कॉस्ट अकाउंटेंट। एम आई राइट? करेक्ट, करेक्ट। बट अगर आप मार्केटिंग की बात करो ना, तो मार्केटिंग में भी आपके पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो कौन सी स्ट्रेटेजीज आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, वो भी तो आप एनालाइज करोगे ना। अगर दो कंपनी है जो आपको सेम प्रमोशनल एक्टिविटीज दे रही है आपके हम्म प्रोडक्ट को एनहांस करने के लिए, लेट्स से, ठीक है। हम्म एक का हम्म कॉस्ट है 10 लाख, एक का कॉस्ट है 12 लाख, ठीक है। हम्म बट आप हम्म स्टडी कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, वॉट एवर रिसर्च यू आर डूइंग, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि 10 लाख वाला, इवन दो द कॉस्ट इज लेस, इट इज नॉट ऑफरिंग मी द मच बेनिफिट जो मुझे 12 लाख वाला दे रहा है। तो आपको वो एनालाइज करना होगा प्रॉपरली। जहां जरूरी है कॉस्ट कटिंग करना, कॉस्ट कटिंग होगा, बट आपको कंपनी का क्वालिटी भी देखना होगा। सो इट डजेंट मीन कि हमेशा कॉस्ट कटिंग ही पे ही कॉस्ट अकाउंटेंट फोकस करेगा। कंपनी के क्वालिटी प्लस प्रोडक्शन, उनका रेप्यूटेशन इन द मार्केट, सब कुछ ध्यान रख के ही कॉस्ट अकाउंटेंट को वर्क करना होगा। चलिए। बट उनका मेन फोकस यही होगा कि कॉस्ट को कंट्रोल किस तरह से किया जाए वेर एवर इट इज पॉसिबल, चलिए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। आई गॉट दिस पॉइंट नाउ। नाउ आई एम कमिंग टू लास्ट पॉइंट मैम, इंटरनल ऑडिटर। अब इंटरनल हाँ, ऑडिटर जब आप कह रहे हैं मैम, आई जस्ट हाँ। हर्ड योर कन्वर्सेशन आल्सो, आई थिंक यू हैव रेस्ट्रिक्टेड पर्टिकुलर टू द अकाउंट्स। सॉरी सॉरी, यू हैव। अकाउंट, अकाउंट से ही आपने मतलब अकाउंट्स के लिए रहेगा या नहीं, किसके लिए रहेगा?
देखो, इंटरनल ऑडिटर तो कहीं पे भी हो सकता है ना, हर कंपनी में इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अकाउंटेंट वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वही इंटरनल ऑडिटर होगा। इंटरनल ऑडिटर का काम क्या होता है कि कंपनी के जितने भी रिकॉर्ड्स है अकाउंट से रिलेटेड, जहाँ पे लेन देन हो रहा है, ठीक है, पैसे का, हम्म तो हम्म जहाँ हम्म पे वाउचर्स इन्वॉल्व है, जहाँ पे यू कैन से फिजिकल असेट्स है, तो वो रियल में चेक करेंगे कि ऐसा कुछ है या नहीं है, रैंडमली, बिकॉज दे आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटर एक होता है जो बाहर से अपॉइंट होता है, करेक्ट, जो बाहर के आते हैं। सो हम्म, हम्म, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करके कंपनी क्या कर रही है, एक पहले से ही सेफ साइड बना के रख रही है कि मेरी कंपनी में कोई फ्रॉड और एरर तो नहीं हो रहा। बट इट, बिकॉज एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा तो उनको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, डायरेक्टली कंक्लूजन्स आ जाएंगे कि देयर इज अ नेगेटिव रिपोर्ट, ये कंपनी में फ्रॉड होता है या एरर है, एंड दैट विल गो आउट। सो उसके पहले इंटर ऑडिटर क्या करेगा, पूरा ओवरलुक करेगा कि आपने जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस किए हैं हम्म। वेदर दे आर ट्रू एंड फेयर और नॉट, अगर नहीं है तो वो रेमेडीज सजेस्ट करेगा किस तरह से हमें इसे वर्कआउट करना चाहिए बिफोर एन एक्सटर्नल ऑडिटर कम्स इन। गॉट इट मैम, थैंक्स। ओके। वेलकम। यस डिम्पल। Ma'am, actually, could you please explain the significance of responsibility center, delegation and control? सी, डेलीगेशन एंड कंट्रोल का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, आप बताइए, आपको क्या समझ आ रहा है डेलीगेशन का मतलब, इन सिंपल लैंग्वेज। हाँ, आप भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में अगर बोलूं तो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। यस, यस डिम्पल बताइए है। सी, डेलीगेशन मतलब क्या है, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क, अथॉरिटी में एक पर्टिकुलर पर्सन को प्रोवाइड कर रही हूँ कि आपको ये काम करना है। ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक एग्जांपल दिया था, आई थिंक प्रीति का था शायद। प्रीति इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कुछ भी चीज गड़बड़ होती है, हम किसको पूछेंगे, प्रीति को पूछेंगे। वाई? बिकॉज वी हैव असाइन द टास्क टू प्रीति, मतलब मैंने अपनी कंपनी का एक पर्टिकुलर रोल प्रीति को दे दिया है। सी, कंपनी में बहुत सारे वर्क होते हैं, एक ही चीज नहीं होगा सिर्फ पैसा आएगा आएगा, करेक्ट, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, बजटिंग होगा, प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, हर एक चीज होगा। सो एक इंसान हर एक जगह पे तो काम नहीं कर सकता ना, द वर्क शुड बी डिवाइडेड सो दैट इट गोज ऑन स्मूथली, करेक्ट। सो दैट इज वेयर द डेलीगेशन वर्क कम्स, कि आप अपने काम को बांट रहे हो। एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे घर पे कोई फंक्शन है, सो मम्मा ने बोला डिम्पल आप ये काम करोगे, आपके सिस्टर को बोला ये काम करोगे, तो यहाँ पे मम्मा ने क्या किया, डिवाइडेड द वर्क, सो दैट इज डेलीगेशन। नाउ क्लियर? यस डिम्पल, नाउ क्लियर? Yes, ma'am, it is clear. And ओके फाइन। one more doubt I have. Can internal auditor be considered as CA? यस, ही कैन बी। CA can be an internal auditor, na? या यस यस यस, नो प्रॉब्लम। Okay, okay, ma'am. Thank you. यस कृपाली। Ma'am, please explain the ignore the personal feedback in a limitation area. लिमिटेशन में से पर्सनल फीडबैक को इग्नोर करना हो, कैसे उसकी लिमिटेशन हुई वो एक्सप्लेन ओके करेंगी? ओके ओके, पर्सनल रिएक्शन एंड फीडबैक, करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे कैसे, देखो, लेट मी जस्ट फर्स्ट दिस। ओके, देखो, अगर पर्सनल रिएक्शन एंड फीडबैक का मतलब क्या होता है कि कंपनी है, तो कंपनी में क्या इमोशंस यूज होते हैं, कभी आपने देखा है कि कंपनी इमोशंस के बेसिस पे चलती है? नो, कंपनी वांट्स व्हाट, प्रॉफिट। तो कोई भी चीज कंपनी में होगी वो आप क्या करोगे, मॉनिटरी टर्म्स के बेसिस पे उसको वैल्यू करोगे, ना कि कंपनी का एम्प्लॉय क्या सोच रहा है, कस्टमर का फीडबैक क्या है,
पर्सनल फीडबैक क्या आप है वो सेकेंडरी हो जाएगा, वो आप एक सजेशन ले सकते हो, बट इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे कंपनी का सीईओ, कंपनी का डायरेक्टर क्या देखेगा, मेरी कंपनी कितनी प्रॉफिट में जा रही है, दैट इज रिलेटेड टू मनी ओनली। उस टाइम पे आपका कंपनी ये नहीं सोचेगा कि सामने वाले का पर्सनल रिएक्शन क्या है, पर्सनल रिएक्शन इन द सेंस कि वो क्या सोचता है। ओके, नाउ क्लियर, फाइन। आई थिंक वन स्टूडेंट वाज हैविंग डाउट ऑन कॉस्ट सेंटर, पहले मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके, कॉस्ट सेंटर मीन स्टूडेंट्स जहां पे मैनेजर ये डिसाइड करेंगे या ध्यान रखेंगे किस तरह से हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है। सी आप ना एक सिंपल लैंग्वेज में सोचो, बिकॉज अकाउंटिंग इज ऐसा नहीं है कि बहुत अलग चीज आपको बता रहा है, इसको आप अपने डे टू डे लाइफ के साथ रिलेट करने की कोशिश करो, योर आंसर्स विल बिकम वेरी इजी। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट और सेंटर दोनों को पहले आप अलग करो वर्ड को। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, क्या खर्चा हो रहा है, करेक्ट। तो कंपनी में कितने मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, करेक्ट। तो मैनेजर क्या करेगा, किस तरह से वो एक्सपेंसेस को कंट्रोल करे, जहां जहां पॉसिबल होगा, अननेसेसरी करने की जरूरत नहीं है। अगर जेन्युइन एक्सपेंसेस है वी कैन कीप दैट, राइट। हमें ये देखना है कि कितने कम खर्चे में हमारी क्वालिटी अच्छी मेंटेन होती है, दैट इज कॉस्ट सेंटर। आई थिंक द पर्सन हु वाज हैविंग दिस डाउट, इट इज क्लैरिफाइड। Okay, then Jay, we have 5 minutes more students. Okay. Ma'am, Yes, actually, Jay. I have a question about performance measurements. Yeah. Actually, मेरा net unstable था, so मैं सुन नहीं पाया. So, will you explain again performance measurements? Okay, performance measurement. And lower down your hand quickly. So performance measurement, देखो performance को measure करना, it means अगर मैंने let's say marketing team को target दिया है 1 crore का, okay, and marketing team exceed कर रही है वो budget to 1.2 crores. So यहाँ पे मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि मार्केटिंग टीम को जो बजट दिया गया था उन्होंने वो एक्सीड कर दिया। तो बीइंग द कंट्रोलिंग पर्सन, व्हाट आई विल सी कि क्या रीजन से मार्केटिंग टीम का एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया, वेदर दोज आर जेन्युइन और नॉट। अगर जेन्युइन नहीं है तो फिर मैं उनको रेमेडी सजेस्ट करूंगी कि किस तरह से आप उसको कम कर सकते हो, कहाँ कहाँ जरूरत है वो कॉस्ट कम कर सकते हो। सी ऑल दिस आर रिलेटेड विथ ईच अदर, हर एक जितने सेंटर्स है ना एक दूसरे के साथ रिलेट है। कॉस्ट रिलेटेड विथ रेवेन्यू, देन इट इज रिलेटेड विथ प्रॉफिट, इट इज रिलेटेड विथ इन्वेस्टमेंट, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे। ओके अनुज, यस क्विकली अनुज। केयूर। मैम, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू दोनों में नॉर्मल कॉस्ट में क्या फर्क रहेगा, क्योंकि मेन कंपनी का प्रॉफिट होगा ना, तो एक मिनट, मैक्सिमम नहीं नहीं प्रॉफिट होगा, उसके नहीं, बाद रेवेन्यू रेवेन्यू, जनरेट होगा ना। नो नो, सी देयर इज अ डिफरेंस। आपको तो फिर मीनिंग ही नहीं पता रेवेन्यू का। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, आपकी कंपनी कितना इनकम कर रही है, राइट, कितने पैसे आ रहे हैं आपकी कंपनी के पास, दैट इज रेवेन्यू। प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस क्या था और आपका कॉस्ट प्राइस क्या था, उन दोनों को जब आप माइनस करोगे तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपका प्रॉफिट कैन नॉट बी 100% रेवेन्यू, इट कुड डिफर, करेक्ट। Yes, Kayur, understood now? यस मैम। Okay, fine. Thank you. Recording stopped. Gautam, Recording in progress. Anand, Yes, ma'am. Ma'am, is that any technical center in the responsibility? Is that any technical responsibility in the center? these are the main centers. These are the main 4 centers that you have Okay. to. Okay. हाँ,
फिर वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा कि उनको रखना है नहीं रखना है. There is no hard Okay. and fast. But these are the main which every company has. Okay. Please lower down your hand quickly. Yes, Anjali. Ma'am, I have a query regarding limitations. Presence of conflict of interest. Can you repeat once again? Okay. Fine. Presence of conflict of interest मतलब मैंने आपको एक टारगेट दिया है, ठीक है? आप क्या करोगे? आपके ऊपर मैंने वो टारगेट डंप किया है. ओके, यू नो दैट टारगेट इज नॉट अचीवेबल. वो टारगेट मैं अचीव नहीं कर सकती, बट कंपनी क्या बोल रही है? आपको करना ही होगा. सो यहाँ पे उसके वजह से क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपके और आपके मैनेजर के अंदर, बिकॉज मैनेजर अननेसेसरी आपको प्रेशराइज कर रहे हैं वो टारगेट अचीव करने के लिए, विच इज नॉट पॉसिबल इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे आपकी सोच और आपके मैनेजर की सोच मैच नहीं होगी. उस टाइम पे डिपार्टमेंट पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है. यस राहुल. Students, quickly unmute हाँ because मैम. we have only 4 हेलो minutes more. Yes, मैम, व्हाट yes, इज द मैम, want to know one example of profit center and cost center. Sorry, profit center and revenue. प्रॉफिट सेंटर एंड रेवेन्यू सेंटर. ओके, देखो एक सेल्स टीम है जिसका टास्क है प्रोडक्ट को सेल करना, सर्विस देना, करेक्ट? तो उसका परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करेंगे? क्या सेल्स का रेवेन्यू जनरेट हुआ? दैट इज रेवेन्यू सेंटर, बराबर. अब प्रॉफिट सेंटर में क्या होगा? एक यू कैन से कंपनी है, ठीक है, जहां पे वो सेल्स भी कर रही है और उनको ये भी ध्यान रखना है कि मेरे कंपनी का प्रॉफिट कितना आया है, जहां पे मेरे अपने खर्चे कंपनी के माइनस कर दिए. एक सिर्फ फोकस करेगा कि मेरी कंपनी में कितना इनकम आ रहा है आ रहा है आ रहा है. दूसरा सेंटर ये देखेगा कि इनकम तो आ रहा है बट उसके साथ खर्चे भी है ना, मेरी कंपनी के रेंट भरना होगा, सैलरी देनी होगी, इन्वेंट्री का कॉस्ट होगा. तो ये दोनों चीजें माइनस करने के बाद नेट कितना अमाउंट है, दैट इज आवर प्रॉफिट पार्ट. दैट इज द डिफरेंस. So I think students, we can stop here and we have the last 2 sessions where you can ask me the queries. Okay. So I think already we have exceeded the time. So what we discussed today: accounting plan, meaning of responsibility centers, significance of responsibility centers, limitations, types, objectives and determinants. Okay. So आपकी जो भी क्वेरीज है प्लीज आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए. जब हमारे सब यूनिट्स खत्म हो जाएंगे ना, तो लास्ट के 2 सेशंस आपके क्वेरीज के ही सेशन है, उस टाइम पे आप रेज कर लीजिए, ठीक है? बट प्लीज बता देना दिस वाज रिलेटेड विथ योर दिस पर्टिकुलर क्लास. So thank you students for attending today's session. We'll meet in the next session. Thank you. Have a great day. Take care.